Good morning, team. Maharashtra CM to sign MOU worth 1,40,000 crore lakh at Davos. Now, if this agreements are signed, they are saying it will be creating a job of 66,500. Now, and almost 21 MOU is on cards. RBI on Monday said any person looking to acquire more than 5% stake in the bank will need prior approval from regulator. It has come on Monday. I don't know what will be the impact, but this is something very interesting. Either Industries, a chemical company, capex of 190 crores, of which 163 crores rise through IPO, concluded in June 2022. They have said the trial run is going on, and 16th from 16th January. And the commercial production will start in 10 working days, and this will add capacity of 3,500 metric ton per annum, and it will produce 5 new specialty chemicals. India has cut windfall tax on crude oil. Previously, it was 2,100 per ton. It has become 1,900 per ton. ATF levy also has come down from 4.5 rupees per liter to 3.5 per liter. Export duty on diesel now has been reduced to 5. This includes other charges also. Chennai NCLT bench has approved amalgamation of Equitas Holding and Equitas Small Finance. The order was passed on 12th. The news on Siemens, there are more data to it. Now, the order is 26,000 crores. Siemens have signed the agreement with the Ministry of Railways yesterday, and these are electric locomotive, and they will provide service and maintenance for 35 years. And these are for freight transport to load 4,500 tons at a maximum speed of 120 km per hour. So, our goods train has been running at 28 to 30 kilometers per hour, but that is not enough. If we need to reduce our logistic cost, our goods train has to run at 120 kilometers. So, in that effect, the government has signed this agreement. Ministry of Railways have signed this agreement. Angel One declared results. The revenue was higher by 2% quarter-on-quarter basis. Year-on-year basis, it was 25.5% higher at 759 crores. Profit after tax is higher by 38.5% year-on-year basis at 228 crores. Client base is almost 1.25 crores, which is 60% higher year-on-year basis. Trade data has come. Export is at $34.48 billion, which is down by 12.2%. So after a very long time, we are seeing contraction in our exports. It is because of slowdown in Europe and US. Import is also contracted by 3.46% at $58.24 billion. But the trade deficit has increased. Our trade deficit is now $23.76 billion now compared to $21.06 billion last month, November month. Bank of Maharashtra came with the results. I think Federal Bank result also was very good. Bank of Maharashtra also results is very good. So the deposit grew by 11.6% at 2,08,000 crores. Advanced by 21.6% at 1,56,000 crores. Profit after tax was higher by 138% at 775 crores. And net interest income was higher by 29% at 1,980 crores. And NIM was at 3.6%. GPT infra project, they have got an order worth of 216 crores. For proposed extension of Ghatkopar cable, State Road, some bridge near LBS Road junction, and
Eastern Express Highway, they are saying the current order book is 2,200 crores, and the current year they have got about 855 crores. We don't track this company. L&T, as said, it has won an order. There is a company called Fast Business, building factories for fast business. So they have got twin towers. In one tower, it will be 6 basement, ground floor plus 22 floors. In other thing, it will be 6 basement, ground plus 41 floors. It is in Hyderabad, and 18 months is the time duration for completion, and it will be almost 60 lakh square feet. And the order is between, they never give the order amount, but the range is 1,000 to 2,500 crore order book. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक बार समझने कर लेते हैं. कल फेडरल बैंक के नंबर्स आए थे, जो नंबर्स काफी अच्छा आए थे. स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ थी, ईयर ऑन ईयर 20% का हायर देखा गया. देन नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है 27.1% ईयर ऑन ईयर, और उनका एडवांसेस ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग आया हुआ है. नेम्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है सिक्वेंशियली 19 बेसिस पॉइंट से 3.49% से इंक्रीज हुआ है. कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी वो इंक्रीज हुआ है 21 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर. पैट ग्रो हुआ है 54% से ईयर ऑन ईयर. टोटल डिपॉजिट ग्रो हुआ है 14.8% से. ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे आए थे. देन नेक्स्ट अपडेट है सोमानी सिरामिक्स के ऊपर. कंपनी ने ओपन किया सोमानी एक्सक्लूसिव स्टोर इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो बंसल सैनिटरी स्टोर के नाम से है. ये सोमानी का एक्सक्लूसिव स्टोर है अप्रॉक्स लाइक 2000 स्क्वायर फीट में, और जो आउटलेट ऑफर करेंगे वाइड रेंज में वो वॉल, फ्लोर टाइल्स, सैनिटरी, बाथ फिटिंग्स और जो मेजर कैटेगरीज है उसमें. और स्टोर वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा होम ओनर्स के लिए और प्रोफेशनल कस्टमर्स के लिए, जो ऑफर करेंगे अनमैच सर्विसेज और एक्सटेंसिव होम डेकोर सॉल्यूशन. करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग या जो टारगेट प्राइस है वो 722 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से. नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी के ऊपर. कंपनी ने इंक्रीज किए कार प्राइसेस 1.1% से जनवरी 16 से 2023 से. जो प्राइस हाइक है वो वैरी होंगी, उनके मॉडल है उसके हिसाब से. और कंपनी का कहना है कि वो कंटिन्यू होगा. इंक्रीज कॉस्ट जो प्रेशर है ओवरऑल ड्रिवन हो रहा है ओवरऑल इन्फ्लेशन और रिसेंट जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके कारण. कंपनी ने बोला कि वो मैक्सिमम एफर्ट करेंगे रिड्यूस कॉस्ट करने में, और पार्शली ऑफसेट होगा इंक्रीज इसमें. और इनका और जो उनका इम्पोर्टेंट पास होगा वो इम्पैक्ट होगा प्राइस इंक्रीजेस में. देन नेक्स्ट अपडेट है वियाकॉम 18 के ऊपर. वियाकॉम 18 जो कंपनी है उनको मीडिया राइट्स आईपीएल जो वुमेन कैटेगरी है उनका नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ऑर्डर मिला है, जो उसमें 951 करोड़ कंपनी ने पे करने वाली है, और जो ट्रांसलेट होगा 7.09 करोड़ का पर मैच. और तो ये अच्छा होगा नेटवर्क 18 कंपनी के लिए. और वियाकॉम उन्होंने डिजिटल राइट्स भी मेंस आईपीएल के मतलब जीत चुके हैं, और मीडिया राइट्स से फीफा के वो भी उनको मिले हैं. तो ये इंक्रीज करेगा जो उनका यूजर बेस है, और इवेंचुअली उनका जो रेवेन्यू ग्रो करने के लिए एक अच्छी न्यूज है. नेक्स्ट अपडेट है टीसीएस के ऊपर. टीसीएस ने अनाउंस किया कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कस्टमर इंटेलिजेंस एंड इनसाइट सॉल्यूशन उनके जो स्कॉट वेस्ट यूनियन है उसके लिए, जो इम्प्रूव करेगी कस्टमर एक्सपीरियंस. और जो स्कॉट वेस्ट है वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिटर यूनियन है यूके में, और उसका जो रेवेन्यू है वो क्लोज अराउंड 36 मिलियन पाउंड है फाइनेंशियल ईयर 22 में. तो ये सॉल्यूशन बेसिकली इंटीग्रेट होगा टीसीएस के साथ, जो करंटली अभी यूज हो रहा है स्कॉट वेस्ट के साथ, और वो उनको हेल्प करेंगे उनका जो रिड्यूस करने में बैड डेब्ट्स और एनपीए को. तो ये अच्छा होगा टीसीएस के लिए, उनके फ्यूचर अर्निंग्स के लिए. देन नेक्स्ट अपडेट है फिनिक्स के ऊपर. फिनिक्स मिल कंपनी है, उन्होंने एक एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी है फिनिक्स लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर लिया है जानस लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का, और वो उसकी जो वैल्यू है वो 26.03 करोड़ है. देन एनटीपीसी कंपनी है, उनकी जो सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने साइन किया है एमओयू त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ, जो डेवलप करेंगे फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड बेस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स त्रिपुरा में.
देन रिलायंस इंडस्ट्री है, उन्होंने पीएलसी के साथ पार्टनर किया है। जो उनका प्लान है कि वो सस्पेंडेड करेंगे जो प्लान हुआ था ऑक्शन सेल ऑफ नेचुरल गैस, उनके जो केजी D6 ब्लॉक्स था उसके लिए, और ये फॉलोइंग चेंजेस हो गए गैस मार्केटिंग रूल्स में, ये अपडेट कंपनी ने दिया है। देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो बोर्ड डायरेक्टर है उनकी मीटिंग शेड्यूल हुई है जनवरी 24 को। जो मीटिंग है 2000 करोड़ रेज करेंगे वाया एनसीडीज के। नेक्स्ट अपडेट है एमएनएम के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है उनकी जो XUV 400 है उसकी प्राइसिंग, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल SUV है और जो प्राइस है वो 50.99 लाख है। और ओवरऑल जो इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है वो एप्लीकेबल होगी फर्स्ट 5000 बुकिंग्स के लिए, और इसके 2 वेरिएंट्स है। तो और महिंद्रा का एम है कि वो डिलीवर करेंगे 20,000 यूनिट्स XUV 400 के विद इन ईयर्स में लॉन्च होने के बाद। देन नेक्स्ट अपडेट है वीमार्ट के ऊपर। कंपनी के इसमें जो उनका जो एक स्टोर है जो कानपुर और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसमें फायर एक्सीडेंट हुआ था, बट उन्होंने इन्फॉर्म में एक्सचेंज किया है कि कोई भी इंजरी और लॉस नहीं हुआ है ह्यूमन लाइफ में। सिर्फ उनका जो डैमेज हुआ है वो इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, कैश और जो स्टोर्स में जो उसके अलावा जो सामान था उसके उसमें हुआ है। तो ये उनका जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट अपडेट है व्हील्स इंडिया के ऊपर। व्हील्स इंडिया स्टार्ट करने वाली एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हील्स जो एडवांस फ्लो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। और जो ऑटोमोबाइल व्हील मेजर व्हील्स इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया है और वो फ्लो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस मार्केट में होगा। द नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र को जो सीएम है उन्होंने साइन किया है MOU कुछ अराउंड 1,40,000 करोड़ 1,40,000 लाख अराउंड करोड़ के अराउंड है, जो क्रिएट करेंगे जॉब अराउंड 66,500 के अराउंड। देन नेक्स्ट अपडेट है आरबीआई ने इन्फॉर्म किया है कि वो 5% मतलब जो भी इन्वेस्टर है वो 5% स्टेक बैंक में लेने वाले, तो उनको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो पता नहीं, तो ये एक वेट एंड वॉच जैसा सिनेरियो है। देन इंडिया में विंडफॉल टैक्स कट हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो पहले कुछ अराउंड 2000 पर टन था और अभी जो है वो 1900 पर टन है। और इवन एक्सपोर्ट डीजल है उसमें भी रिड्यूस देखा गया है, उसमें इंक्लूडिंग जो अदर चार्जेस है वो भी है। देन नेक्स्ट अपडेट है सीमेंस के ऊपर। सीमेंस को जो ऑर्डर मिला है 26,000 करोड़ का, उन्होंने जो साइन किया एग्रीमेंट रेलवेज के साथ, तो ये कंपनी 35 इयर्स के लिए सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेन का जो स्पीड है वो 28 से लेके 30 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हम लोग को रिड्यूस मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस करना होगा, तो कम से कम ट्रेन का जो स्पीड है वो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने सीमेंस के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। द नेक्स्ट अपडेट है एंजल वन के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर 25% से इंक्रीज हुआ है। 759 करोड़ रिपोर्ट किया है। पैट जो है वो 38.5% है ईयर ऑन ईयर 228 करोड़। उनका क्लाइंट बेस है वो 1.25 करोड़ है, 60% से हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। देन ट्रेड डेटा नंबर्स आए थे। एक्सपोर्ट है वो $34.48 बिलियन कुछ अराउंड है, 12.2% से डिक्रीज हुआ है। और इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3.46% से $58.24 बिलियन। देन नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आए थे। नंबर्स काफी अच्छा है। डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है 11.6% से, एडवांसेस 21.6% से इंक्रीज हुए हैं। पैट भी हायर आया है। नेट इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 1.98% से नहीं सॉरी 1,918 करोड़ आया है और उनका जो नीम है वो 3.6% से इंक्रीज हुआ है। तो नंबर्स काफी अच्छे आए थे। देन नेक्स्ट अपडेट है एलएनटी के ऊपर। एलएनटी ने बोला है कि उनको एक ऑर्डर मिला है जो फास्ट बिजनेस जो कंपनी है वहां से जो ट्विन टावर है 6 बेसमेंट होगी और ग्राउंड फ्लोर और 22 फ्लोर होगी। देन दूसरा टावर है उसमें 6 बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर एंड 41 फ्लोर का कुछ अराउंड प्लान है। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद पे है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। इसकी जो वैल्यू है वो इतना पता नहीं है, बट जो रेंज होगी वो 1000 से लेके 1500 करोड़ है। Technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was a profit booking and we saw some declines close to 60 points during the day.
So majorly it was basically the POC banks and IT and FMCG showed some strength, while metals and auto stocks were under the pressure. So even yesterday when the correction came, the Nifty is now trading above 17,800 levels. So my sense is that as long as Nifty is trading above 17,800, there is a chances that we should be holding to this level and the bounce should come. More or less what we are observing in Nifty is it's a time-wise correction more than a price-wise correction. So we need a technical breakout. So that breakout should come whenever index moves above 18,000, 18,100 level. So even if by any chance, if the sell-off comes, a little bit of panic is there. And I believe the 17,800 to 17,700 should be held. And we should be seeing a buying from those level. Overall, I maintain that on the upside, we should be seeing this pre-budget rally sooner or later. So we just need to wait and watch for some more few trading sessions. On the way up, as and when Nifty closes above 18,100, there will be a momentum. Same with the Bank Nifty. Bank Nifty, the strong support is at 42,000 level. Yesterday, the close is 42,167. So maybe if the Bank Nifty come close to 42,000 yam or 41,800, so that should act as a demand zone. On the way up, since we are heading for the weekly expiry on this Thursday, so there are some hurdles at 42,500, 42,800 call strike price. So they are acting as a hurdle. But over and above, I believe that should be taken out. So whenever the Bank Nifty closes above 43,000, then the aggressive move on the Bank Nifty will also follow. So it's just a wait and watch kind of a market. So lower side, I think it's a buy on decline kind of strategy should be applied. Yesterday specifically, there was a major sell-off in Axis and ICICI, which pulled the Bank Nifty down. So again, at lower levels, I believe these are the strong bets. So we should be keeping a watch on this. So both the indices for the day, it can be a slightly range bound, but supports for the Nifty is at 17,800 and for the Bank Nifty, it is 42,000. Coming to FI data, FNO data. So Nifty futures has witnessed a long unwinding in yesterday's session to the tune of 0.6%, which was a reduction of 13.68 lakh share. PCR has declined from 1.03 to 0.8 ratio. So slightly sell-off has been seen in the put call ratio. The major additions were seen in the 18,000 and 18,100 call option. So that should act as a resistance from the derivatives point of view. And the lower side 17,600 put option has seen a significant addition in open interest. So that will be the support for the Nifty. In case of Bank Nifty, even the Bank Nifty has seen a long unwinding to the tune of 0.60%, which was a decrease of 25.42 lakh shares. Even the PCR in Bank Nifty has declined from 1.02 to 0.72 ratio. Even the Bank Nifty saw some selling. The major additions were seen in the 42,500 call option by 14.98 million shares, and then 42,600 call option by 13.95 million shares. So this will act as a resistance for the Bank Nifty, and in the put put side, 42,000 strike price saw a significant interest built up in the open interest by 2.74 million shares. So that should act as a support. Coming to FI data, FIs has yesterday sold they are sold in the index future close to 12,628 contracts, and net they are short by 32,000 contracts, and the long short ratio is 40%. So we will be keeping a watch on this. So as I said earlier, FI is going above 50%. That is a sign of strength. So overall, I believe it's a wait and watch kind of a market with lower side support at 17,800 and 42,000. So that's all from mine. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning, all. So, a couple of updates on fundamental side. First update is on NewGen. So we had come out with a coverage on NewGen on 24th November 2022. And within 3 months, the stock is up 19% from our initiating coverage level. Today, NewGen will announce results. While Q3 and Q4 for NewGen is robust, we recommend partial booking on the stock considering the recent run-up in price. The next news is on TCS.
So TCS has announced that it has implemented its customer intelligence and insight solutions for Southwest Union to improve customer experience. ScotWest is one of the leading credit unions in UK with revenue close to 36 million pounds in FY22. This solution is integrated with TCS banks and it will help in reducing NPAs and bad debts. So this bodes well for both the companies, and TCS will be the key beneficiary of this solution. Hence, we recommend that, this is a positive thing for TCS. From Viacom 18 has won media rights for women IPL for next 5 years. Viacom will pay 951 crores, which translates into 7.09 crore per match. So this is being done basically to garner subscribers. And if you see, Jio is giving even IPL men for free. So this will help them in increasing their subscriber base, and this bodes well for TV 18 in the longer run, and its holding company, which is Network 18. Uh, Another news is on Somani Ceramics. So Somani Ceramics has opened Somani exclusive stores in Aligarh, Uttar Pradesh. The company's exclusive store is spread over 2,000 square feet. Outlet will offer a wide range of wall and floor tiles, and it will be with bath fittings across all major categories. The store will be one-stop destination for homeowners and professional customers that offer unmatched services and extensive home decor solutions. Currently, we have a buy rating on the stock with a target price of 722. Another news is on Maruti Suzuki. So Maruti Suzuki said that it has increased car prices by 1.1%. The price hike will vary across models. The price hike has been taken to pass on the cost due to inflation and recent regulatory requirements. We have a hold rating on the stock with a target price of 10,047. There is one more news on Federal Bank. So Federal Bank has reported its results, and the results were robust compared to peers. So Federal Bank has reported credit growth of 20% YOY, backed by strong growth across segments. NII has grew 27.1%. NIMs have improved 19 bps to 3.49%. Operating profit has also improved, and PAT has grown 54% YOY due to better asset quality. So, the stress book as a percentage of asset has also declined to 1.78% versus 1.98%. Management has guided high teens credit growth for FY24 and maintain a guidance of exit ROA of 1.25%, which is very well for Federal Bank overall. And it remains one of our top picks. And we have maintained our buy rating on the stock with a new target price of 175 and a price to book value of 1.4, which is pre-COVID average. Other news are NTPC. NTPC Renewable Energy has signed an MOU with Tripura government for development of floating and ground mounted based renewable energy projects in state. Second news is on South Bank of Baroda. The central government has extended the tenure of Sanjeev Chadda as managing director and chief executive of the bank till date. That is 30th June 2023. This bodes well for Bank of Baroda. Mahindra and Mahindra has launched an electric version of XUV 400 at an ex-showroom price of 15.99 lakhs. So this will improve the volumes of Mahindra and Mahindra in future. So this bodes well for Mahindra and Mahindra. Siemens India, the company has won rupees 26,000 crores from Indian Railways for supply and maintenance of 1,200 locomotives and 9,000 horsepower. Mukund, in a letter to shareholders, CMD Neeraj Bajaj has assured that company is on track to meet its revenue target of rupees 6,000 for the current fiscal. In India Pesticides, the company has commissioned another herbicide technical product, which will be manufactured at its India facility and is exclusively for export markets. In PNB Housing, the board will meet on January 24th, considering a raising 2,000 crores via non-convertible debentures. And lastly, on Phoenix Mill, the company's subsidiary Phoenix Logistics and Industrial Parks completed the acquisition of Janus Logistics and Industrial Parks for a consideration of 26.03 crores.
That's it from my side. Over to you, Vikas. Thank you, Devang sir. Good morning, everyone. Further a news update from my side. Reliance Industry Limited and its partner BP PLC on Monday suspended a planned auction for sale of natural gas from their KG-D6 block following changes in gas marketing rules, the firm said in a notice. V-Mart Retail, a fire accident took place at one of its company store located at Kanpur, Uttar Pradesh on Monday. The company informed the exchange that there was no loss or injury to the human life. However, this has resulted in damage of inventory, fixed asset, cash, and other in the store, thereby disrupting the operation of the aforementioned store. Will India start export of wheels with advanced flow technology? Automobile wheel major Wheel India Limited on Monday said it has begun export of wheel made with the flow from technology to the US market.